we can define some functions which are called setters and getters in order to change the values or access the variables that are defined within the structs. Okay, and these special type of functions that we'll be talking about today, they are called setters and getters, and we'll see that how these can actually be used. Okay, so before we actually move on to that particular discussion, let's just see that we can have some more function definitions within the standard function definitions. Now you need to remember this. In some of the IDEs, some of the environments, you really don't require to define these setters and getters separately. Once you define the body of the structs, these setter, getters, constructors, all these are defined, especially the default constructors, they are defined automatically. Okay, so we'll come to that point in a while. But before that, I'll just recap some of the stuff that we did last time. We talked about structures within structures last time, and I'll just share the screen. Okay, and this is what it looks like. So you have a structure defined, struct defined, and then there is another struct that has been defined here. And what you can actually do is that within the body of structure or struct number 2, you can initialize an object of struct number 1. Okay, the first struct that you have defined. Okay, so this initialization is done within the body of the second struct. Now what will happen is that that struct number 1 or structure 1, which is the name of the struct that you have defined, structure 2 will basically contain an object of structure 1, and therefore all the attributes and all the functions of structure 1 all will automatically become part of structure 2 through this object. So object this obj is primarily the instance of structure number 1, and this instance of structure number 1 basically becomes part of structure number 2 here, and then all the features and all the functions that you have defined here, they also become part of structure 2, and you can call them from within the main program through a specialized function struct call. And this is what the example is from last time, that you can define the date instance D within this struct which is called person, and then in case of the parameterized constructor, this is the parameterized constructor that does not contain initialization of D here. The reason is that initialization of D is done separately in its own definition. In case of print, if you want to print the contents of structure person, then you have to give an explicit call to d.print. Remember here, this print is the function that you have defined within date. Okay, it's not the print function that is defined within person. Okay, so it's not this function, right? So when you call print from with an instance of person, this print function is called, and within this print function, the print function for D is called. Okay,
So p dot print will call the print associated with person, which is this one, and within this function there is another call to print, which is the print associated with d, not the print that is defined here. Okay. Right, and this is how you can access these variables. So if you want to directly access the contents of d from the main program, you can write down p dot d dot day and write down the value which you want to assign to that. So this is how you can actually do that, access the values. Okay, so now this was stuff that we did last time. Okay. So now what we'll see is that we'll see some advanced, say functionalities of structs. Now, suppose that you have got, say you want to maintain the inventory of a company. Okay, the inventory of a company. Let's say the inventory of a company contains various parts here. Okay, so you have parts that are associated with that company. So you have got parts. Okay, and then you have got some, let's say, cost associated with those parts. Okay, so you have got, let's say, parts here, let's call them p, then you have got some cost associated with that, and then you have got the number associated with these parts. Okay, so you have got, let's say, part 1 here. Okay, so this is part 1, and it has got some name, it has got some associated cost, and it has got some number which is present in the inventory. Similarly, you have got part 2, okay, and this would also have some name, some cost, and some number associated with that. Okay, so for example, part 1 is battery, the name is battery here, the cost associated is let's say rupees 500, and the number associated is battery 001, or something like that. And similarly, you have another part which is, let's say, the casing of a mobile phone. So part name is casing, part cost is, let's say, rupees 200, and then you have got number which is, you will say that, okay, it's casing 0051, so whatever those numbers are. So similarly, you have got another part 3. Okay, and this part 3 would also have some name associated, some cost associated with it, and some number associated with this. So you can see that here it's actually a matrix that you are actually developing here. Okay, a matrix has been developed, okay, where each row here is representing a unique part. So each row here is representing a unique part. So this is part number 1, this is part number 2, this is part number 3. This is what you call an array of parts. So you have got an array of different parts here, and you have joined them together. Okay, an array of different parts, and these have been joined together, and this could be viewed as a table as well. Okay, so this table is generally read row wise. Okay, so you have row number 1, or you can call it an array number 1, and then you have got an array number 2, and then you have got an array number 3. So this is generally the case when you have got let's say um, say when you are maintaining an inventory. Okay, so when you are maintaining an inventory, or let's say you are maintaining the names, you are maintaining the result of a class. In that case also, you have different students here. Each row would be representing different students, and this could be represent marks in various subjects. Okay, so this could be marks in mathematics, physics, chemistry, and so on and so forth. Okay, so when you have multiple individuals, and you have got you want to maintain say the data in the form of a table, then in that case you can define an array. Okay, so an array can actually be defined. Okay,
These arrays can actually be defined, and these arrays can actually be then accessed to retrieve the data that is present within them. Okay, so we'll see that how structs can actually be used to define these such arrays, and how can these be used to actually store and represent the data. I hope this is clear. इसमें कोई issue नहीं है. Okay, so let's, for the example of our the inventory example, let's just define a struct which is called inventory here. Okay, so we define a struct which is called inventory. So this is the name of the struct that we have defined, and this struct actually contains three variables and one function. So you have got part number, you have got the cost associated with that, and you have got the price associated with that. Okay, the difference between cost and price is that price would contain the profit margin as well, therefore the cost would be different. Okay, so you can also have two separate entries here. Okay, so these are the three things that every inventory element would contain, and then you want to print these three elements. Okay, so this is a standard thing that we have been doing last time, and this is done in the outside your main program. So you define this struct outside your main program here, and then within your main program you can actually define an array of these different structs, and an array would represent what? An instance. Every row would represent an instance of this inventory. Okay, and how do you actually do that? By using this this special syntax that we have got here, of this syntax of an array. So here we have got inventory, which is the name of the struct that you have defined. So this is the name of the struct that you have defined. This table is an instance of this struct, and this table is defined in the form of an array here, and the array here contains how many rows? 4 rows. So this bracket and then this number here is, this whole syntax here is actually representing an array of structs. Okay, so you have got like 4 different arrays of struct here. Okay, yes, so it's an array of variable names, and these would be the headers. Okay, the variable names are primarily the headers, and each cell in this array would contain the value of that. Okay, so we'll come to that in a while time. Size of the array has to be given already. Yes, size of the array has to be given. Okay, so this is primarily okay, there are two sizes. One is the number of rows that are present. So this declaration here would give the number of arrays that will be generated. Okay, so here 4 says that you have to generate 4 arrays or 4 separate rows here, and the number of columns would be defined by from the definition of the inventory. So inventory contains 3 variables, therefore the number of columns that you will have will be 3, and the number of rows that you will be having in this table would be 4, and that 4 has to be defined कि आपको कितना उसमें चाहिए. Okay, yes, 4 instances, and जी जहाँ से we have generated 4 instances. Yes. Yes, you can use also vectors, and there are other ways of doing it, but here we are actually primarily using the context of the array here, so you can use that. Okay, and as always the index of this table actually starts from 0. So table 4 would mean that you will have table 0, table 1, table 2, table 3. Okay, so this is how this would actually look like. Okay, so let's see that what would happen in the main. So this is what you can do in order to
Yes, in order to fill the entries which are present in this particular array. Okay, so you have table 0, table within bracket 0 would mean that I'm talking about the first row here, right? So the part number in the first row is 123, part number in the first, cost in the first row is 10, and price in the first row is 15. And then you can print this array as well. Oh. Okay, and this is what it would look like. I hope this diagram here would answer some of the questions that we have, that you have asked. Okay, so table 0, we have entered some values here, and this is the visual representation of that. Okay, so table 0 part number is 123, table 0 cost is 10, and table 0 price is 15 here. Okay, and similarly I can populate table 1, table 2, table 3. So you can consider this to be it's you have correctly said that it's actually an array of different structs. So this is array number 1. This is another one. This is another one, and this is one. So each array is primarily representing a struct. So this is primarily why we are saying struct, because there are 3 variables associated with that. So therefore, these 3 variables would determine the number of columns in a way in a table. Okay, and because there are more than, yes, yes. सर अगर हम पार्ट नंबर को सॉर्ट करें तो जो उसका रिस्पेक्टिव कॉस्ट और प्राइस है तो वो भी ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएगा या हमें करना पड़ेगा खुद से? वो अरे को जैसे आप सॉर्ट करते हैं उस तरीके से यू विल हैव टू डू इट, यू विल हैव टू लाइक डू इट एक्सप्लिसिटली. अगर स्ट्रेट अवे अगर आप इस सूरत में सॉर्ट कर लगाएंगे, नाउ रिमेंबर दिस इज these are independent, this is just the visualization of that. ठीक है, हम इसको एग्जैक्ट विजुअलाइजेशन इसकी जो है ना वो विजुअलाइजेशन के लिए ले रहे हैं. डोंट लाइक कंफ्यूज इट विद अ सॉर्ट ऑफ एन एक्सेल एंट्री. ठीक है, एक्सेल में तो आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे करना हमारे लिए जो है वो थोड़ा सा इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा. यू विल हैव टू राइट डाउन अ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम फॉर दैट. ठीक है, एट प्रेजेंट अनलेस यू आर यूजिंग सम स्पेशलाइज्ड फंक्शन फॉर इट. ठीक है, सो सर जैसे बबल सॉर्ट होता है, जी जी, अगर हम लगाएं पार्ट नंबर पे तो कॉस्ट और प्राइस भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी या हर हमें कॉलम के लिए करना पड़ेगा? नहीं, आपको हर वेरिएबल के लिए अलग से करना पड़ेगा, अनलेस यू हैव रिटन द प्रोग्राम इन अ वे कि वो उसके साथ जो इंडेक्स पार्ट नंबर का आया है उसी इंडेक्स का कॉस्ट भी आप वहाँ पे एंटर कर दें. तो यू हैव टू एक्सप्लिसिटली राइट इट डाउन. ठीक है, और ऑब्वियसली देयर वुड बी some already written methods available or functions available. You can use those functions also, lekin you have to do it explicitly. Okay, it's not just like a standard Excel sort of function, sorting function that would go on. Okay, so this has to be done. Okay, so this is like a 2D, this is a sort of single D arrays of structs that we have defined. Why we are saying single D? Because इसमें आपके पास जो आपने struct define किया है वो उसमें 3 वेरिएबल्स हैं, और आप हर रो को जो है ना इस केस में वो आप array के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं. So it is primarily an array. There are various ways of doing this, but using arrays this can actually be done in this particular way. ठीक है, मल्टी डायमेंशनल अरेज को भी आप यूज कर सकते हैं, बट दैट वुड मेक थिंग्स मोर कॉम्प्लेक्स. सो लेट्स नॉट गो इनटू दैट एट प्रेजेंट. लेट्स जस्ट सी द बेसिक stuff here, that how it actually works. Okay, so this is how a single dimensional array can be used to represent. Single dimensional array can be used to represent a data that has a matrix form, right? So it has a matrix form here. So table 0 is actually representing part 1. Table 1 is representing
part 2, table 2 is representing part 3. And similarly, you can say that table 0 is representing, let's say if it is marks matrix, so table 0 could represent student 1 and then student 2 and then student 3 and so on and so forth, right? Okay, I hope this is clear. So this is not that difficult, I mean, to understand this particular particular thing. Achha, what you can, now the print statement here, this is table 0 dot print. Table 0 dot print will print the first row. Okay, it would print the struct that is present at index 0. Okay, so these are 4 structs that have been defined here. Okay, instances of structs that have been defined here in the form of an array. Okay. So table, the way this is written here in the program here. So what I'm saying here is that it will print the first array. Okay, the first array is index 0 here, so it will simply print this array. Okay? And if I want to print the complete table, I'll have to write down it in the form of a loop here. Okay, so I'll have to use a loop in order to print the complete parts. Okay, I hope this is clear. Okay, so we'll come to the vectors later on. Sharjeel, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे. But let's just try to complete the discussion related to this. Okay. Right. So I hope this is very clear. Okay. So now you can have the advanced form of this representation also. 2-dimensional में भी आप कर सकते हैं, and then if I mean multi-dimension, 3 dimensions के अंदर भी आप इसको कर सकते हैं. But this is probably the most simplest form of that. Okay. जी अहमद क्या कह रहे हैं, we can't print the table with the current print function. Well, you can try out that. I think there shouldn't be any problem here. It should print. I'll just see in a while if I can also try to implement this in some environment and show you. Acha, in the form, if you want to print the complete table, that means all the arrays, of course इस print function के साथ आप वो नहीं कर सकते. ठीक है, ये print function जो यहाँ पे define किया गया है ना, ये सिर्फ एक row को या एक struct को print करेगा, not the entire table. In order to print the entire table from struct 0 to struct 3, उसके लिए आपको उसको loop में डालना पड़ेगा, right? So yes, in that sense you are right. Acha, how to set the values? Setting the values in case of automatically constructors use होते हैं. You already know that कि आप constructor के through उसको कर सकते हैं और फिर आप उसको print भी कर सकते हैं और check भी कर सकते हैं. So default constructor automatically आपकी जो है ना जो भी आपकी array define होगी, default constructor उसको आप उसको print initialize कर सकते हैं, उसकी set value कर सकते हैं, and that is the default setting. Remember, constructor जो है ना, that is one time setting जो कि आपने instance जब आपने create किया है of struct, उस वक्त वो values को set करता है. अच्छा, उसके बाद आप उन values को change कर सकते हैं from your main program or in any other function. ठीक है, जैसे आपने कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यूज को इनिशियलाइज किया, ठीक है, एंड दैट इज व्हेन यू हैव इनिशियलाइज्ड और व्हेन यू हैव क्रिएटेड एन इंस्टेंस ऑफ a struct, right? And then in your main program, as shown here, in your main program or in any other function, आप उन values को change कर सकते हैं. So you can change these values here. ठीक है, अब आपके पास array of structs है,
तो आपने पहले आपने यानी ज़ीरो को आप ओवरराइट कर सकते हैं, टेबल ज़ीरो को, फिर टेबल वन को ओवरराइट कर सकते हैं, फिर टेबल थ्री को एंड टेबल टू को यू कैन आप उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, राइट। सो दिस कैन एक्चुअली बी डन, ठीक है, आप उनकी वैल्यूज को सेट कर सकते हैं। अच्छा, फॉर सेटिंग द वैल्यूज there are different ways which you can do or which you can perform from the main program, and because as I told you last time कि struct के अंदर जो भी चीज़ें आप डिफाइन कर रहे होते हैं they are globally available, I mean there is scope, उसके जो restrictions हैं वो उस तरह से applicable नहीं होते, ठीक है, they are public in a way, ठीक है। तो आप मेन प्रोग्राम से या किसी और प्रोग्राम किसी और फंक्शन के अंदर इन वैल्यूज को कर सकते हैं। तो here are different ways of that. Okay, so I'll just leave these different methods for you to try out and try to see कि क्या ये इनिशियलाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं या नहीं करते। ओके, सो दिस इज लाइक वन वे ऑफ इनिशियलाइजिंग द वेरिएबल्स, I mean when I mean overwriting the variables or setting the variables after in your main program or in any other function, ठीक है, or this is like another way of doing it, and here you have another way of doing it, ठीक है। So there are multiple ways of initial or of setting the values of your uh, of the arrays, right, that we have. ये जो Yes. alternate मेथड 2 है, इसके अंदर हमें स्पेसिफाई नहीं करना होगा कि हम कौन सा वेरिएबल ऑल्टर कर रहे हैं? नहीं, इसमें जो सीक्वेंस है ना, दैट सीक्वेंस वुड ऑटोमेटिकली डिटरमिन दैट। एंड व्हाट इफ वी जस्ट एंटर, अगर हम एक वेरिएबल सिर्फ एंटर एक वैल्यू एंटर कर देते विदाउट इंडिकेटिंग द वेरिएबल, वो बाकियों में फिर मोस्ट प्रोबब्ली उसकी जंक वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो यू विल जस्ट हैव टू फाइंड आउट दैट, लेकिन शायद वो एक्सेप्ट भी ना करे उस सूरत में। आई हैवंट रियली ट्राइड दैट, लेकिन उस केस के अंदर either the remaining variables would get the junk values or you will get an error, ठीक है। तो the sequence itself would tell you जिस sequence में आपने variables को define किया उसी sequence में ये आएंगे, ठीक है। It might be possible कि कुछ cases के अंदर जो है वो environment आपको शायद इजाज़त ना दे, then it might be possible, ठीक है। So you have to be a little careful in doing this, ठीक है। हाँ, जहाँ जेब यू आर राइट, क्योंकि यहाँ पे हम वैल्यूज को ओवरराइट कर रहे हैं, डिफॉल्ट वैल्यूज ऑलरेडी उसकी सेट हो चुकी हैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू। अगर वो डिफॉल्ट वैल्यू कंस्ट्रक्टर के थ्रू सेट हो चुकी हैं तो यू विल गेट दोज वैल्यूज विल डेफिनेटली बी देयर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि हम उन वैल्यूज को दोबारा सेट कर, ठीक है, या कंस्ट्रक्टर के अंदर भी ये कर सकते हैं। आई मीन कंस्ट्रक्टर के अंदर भी आप ये स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। दिस इज परफेक्टली फाइन, ठीक है जी। Okay, so this is something which is which you can actually use in in the program. जी Fatima, you can ask ask. सॉरी सर, ये पहले का था। अच्छा, okay. So अगर किसी वक्त if you have risen the hand और मैं उसको if I am not responding, that would mean कि I am probably not looking at that particular part of the screen, तो आप उस वक्त unmute करके you can ask the question straight away, ठीक है। Similarly अगर comment है, and if I am not answering that comment, you can ask the question, unmute yourself and ask the questions. अच्छा, here we'll talk about some further points regarding structs, और यहाँ पे हम setters getters की और use of pointers की बात करेंगे, ठीक है। setter getters are primarily functions, और ये functions जो है ना, ये values को as it is clear from the name, setter जो है वो value set करता है और getter जो है वो value get करता है। so if I want to get a specific value of a specific variable, yes सर, अगर हमने डिफॉल्ट वैल्यू का कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है जी और हम सिर्फ एक या दो वैल्यूज पास कर रहे हैं और बाकी को हम एम्प्टी रख रहे हैं, तो बाकी वैल्यूज डिफॉल्ट होंगी या जंक होगी? हाँ, वो आप वो देखना पड़ेगा, उसको रन करके देखना पड़ेगा, ठीक है। द वीडियो विच आई विल अपलोड आफ्टर टुडेज लेक्चर,
उसमें मैं आपको ये करके आपको दिखाऊंगा. ओके, so from now onwards what I'll try to do is if I am unable to show you the programming in Sublime during the lecture part, what I'll do is that I'll record a separate video for the programming bit, और उसको मैं दोबारा उसको मैं अलग से अपलोड करूँगा as I did last time. I don't know whether you had a chance to look at that or not. उसमें the discussion that we had in the lectures, उसी को environment के अंदर Sublime के अंदर I have actually shown you the video how to code that. ठीक है, तो इसी तरह आज के लेक्चर का भी जो कोडिंग पार्ट होगा environment के अंदर, so I'll try to address some of these questions there and see that how it actually responds. ठीक है, so we'll have this discussion part which is in the class, और अगर टाइम मिला तो क्लास के अंदर ही मैं आपको वीडियो जो है ना वो करके दिखा दूंगा. अदरवाइज I'll upload a separate video. जी जी, okay, so I'll see that how this actually works. Probably मेरी जो गट, I haven't really tried that, लेकिन मुझे लगता है कि probably it might give you an error. I'm not really sure, but I'll have to check that. ठीक है सर जी. ओके जी, तो स्ट्रक्ट के ऊपर जो सेकंड है, सेकंड पार्ट ऑफ द स्ट्रक्ट है, दैट इज यूजिंग पॉइंटर्स एंड देन द सेटर्स एंड द गेटर फंक्शन. सेटर गेटर फंक्शन एज इट इज क्लियर फ्रॉम द नेम कि कंस्ट्रक्टर ने तो डिफॉल्ट सेटिंग कर दिया, बाद में प्रोग्राम में आपने कोई वैल्यू चेंज करनी है या किसी वैल्यू को एक्सेस करना है तो आप डॉट नोटेशन यूज करते हैं और वहां से आप उसको एक्सेस कर लेते हैं. वी कैन राइट डाउन सेपरेट फंक्शंस फॉर दिस. सेटर फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो कि जिसके थ्रू आप किसी भी वेरिएबल ऑफ द स्ट्रक्ट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, और उसकी वैल्यू को सेट कर सकते हैं. सेटर मींस सेटिंग द वैल्यू एंड गेटर मींस गेटिंग द वैल्यू. ठीक है, so instead of writing down the name of the function the name of the variable and using the dot notation every time, what you can do is that you can simply call a function. ठीक है, और उस फंक्शन को आप यूज करते हुए आप वैल्यूज को सेट या गेट कर सकते हैं. लेट्स सी एन एग्जांपल बिफोर वी मूव ऑन टू द पॉइंटर पार्ट. So this is the same old struct that we have defined, point, और इसमें दो variables हैं. There is a point constructor that is also present here, which we have defined here. This is the constructor. These are the two variables that we have defined here. Zuhaib, it's not well. You can say that it's another way of accessing the variable. ठीक है, so because this is a function and that's actually a different notation, so you can say that setting the value, this is an alternate to setting the value. Right? Okay, and this is a setter function. Okay, so this is a setter function and you can just have a look at this function and you can see that it's nothing special about this function. Nothing special about this function. It's actually a function that is primarily not returning any specific variable. It's basically setting a variable. So ये जो x है, इस x variable को हम set कर सकते हैं. So we are saying that set the value of x. So set x is the name of the function and the argument is the value which you want to set. ठीक है, and then the setter function contains a simple assignment statement जो कि a को x को assign कर देता है value a. ठीक है, very simple. So this is for a single variable x. So this is a setter function for a single variable x. इसी तरह से आप एक setter function define कर सकते हैं for a variable y. Right? A setter function for a variable y. Right? So I repeat this part here. What is this setter function doing for y? Set y is the name of the function. You are setting a value, जिस value को आपने जो value assign करनी है
वो आप एज एन आर्गुमेंट पास करेंगे और दिस इज द स्टेटमेंट दैट विल गेट एग्जीक्यूटेड. सो जो भी आप आर्गुमेंट देंगे दैट आर्गुमेंट विल गेट सेट टू द वेरिएबल y in this case. अच्छा, सेट x इज द नेम और नेम के अंदर मैंने कैपिटल x कर दिया है, ठीक है, इसलिए उससे फर्क नहीं पड़ता. तो सेट x इज द नेम ऑफ द फंक्शन, ठीक है, इट्स नॉट द नेम ऑफ द वेरिएबल. सेट की जगह कुछ और भी फंक्शन का नाम यूज कर सकते हैं. सेट x इज नॉट नेसेसरी कि आप सेट x ही यूज करें या सेट y यूज करें. दिस इज जस्ट अ नेम, ठीक है. आप ये भी कह सकते हैं सेट अंडरस्कोर वैल्यू अंडरस्कोर x, ठीक है. आप ये भी कह सकते हैं svx, वट एवर, आई मीन इट्स द नेम ऑफ द फंक्शन. और अगर आप वैल्यू को सेट करने के लिए अगर आप दोनों वैल्यूज को एक साथ सेट करना चाहते हैं तो एक ही आप सेटर फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं. सेट एक्स वाई भी कर सकते हैं, सेट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आप एक एक्स्ट्रा स्टेट इन दोनों फंक्शंस को एक फंक्शन भी बना सकते हैं, ठीक है. सो यू कैन डू दिस. जो डिफरेंस होगा वो ये होगा कि डिफरेंस क्या है डिफरेंस कंस्ट्रक्टर्स में और इस सेट फंक्शन में क्या है. एनीवन? जी, यू कैन अनम्यूट एंड आंसर दिस के कंस्ट्रक्टर में और सेटर फंक्शन में क्या फर्क क्या आप देख रहे हैं. सर सेटर फंक्शन हम कहीं भी कॉल कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर. जो कंस्ट्रक्टर है वो सिर्फ जब ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होता है तब कॉल होगा. That's the main difference between the two. कंस्ट्रक्टर सिर्फ उस वक्त कॉल होता है जब आप कोई नया इंस्टेंस ऑफ स्ट्रक्ट डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है. बाद में आप उसको कॉल नहीं कर सकते, ठीक है. जब आपने एक दफ़ा एक दफ़ा एक इंस्टेंस ऑफ स्ट्रक्ट डिफाइन कर दिया, उसके बाद आप सेट फंक्शन ही यूज कर सकते हैं या आप डॉट म्यूटेशन के थ्रू उसके वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है. तो सेट आप किसी वक्त भी कर सकते हैं, किसी वक्त भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर जो है वो उसी वक्त कॉल होगा जब आपने एक इनिशियल इंस्टेंस डिफाइन किया है ऑफ स्ट्रक्ट. एंड देन ऑफ कोर्स देयर आर अदर डिफरेंसेस आल्सो, लेकिन फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिफरेंस है. बाकी डिफरेंसेस भी हैं, और वो ये है कि जैसे नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर जो है वो वही होता है जो कि स्ट्रक्ट का नाम होता है. यहाँ पे नेम कुछ और भी हो सकता है, लेकिन दीज आर सम you can say syntactic differences between the two. जो main functional difference है वो ये है कि setter functions, and same is the case with the getter functions. setter getter functions जो है ना, getter तो खैर उसकी जो functionality है वही different हो जाती है, लेकिन setter function जो है वो function आप किसी भी वक्त program में कहीं भी कॉल कर सकते हैं और अपनी मर्जी की वैल्यू वहाँ पे वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं. अच्छा, so this is what the setting of the variable would mean. So setter functions भी आप जो है ना struct के अंदर define कर सकते हैं, and this is remember in the main body of the program, right? And then comes the getter program. So getter functions क्या करते हैं जी. हसन का क्वेश्चन ये है कि जी मेन प्रोग्राम में आप इसे कैसे कॉल करते हैं. बिल्कुल वैसे कॉल करते हैं जैसे मेन प्रोग्राम में आप प्रिंट कॉल कर रहे थे ना struct के साथ. तो अगर मैं पॉइंट का एक इंस्टेंस डिफाइन कर देता हूँ p, तो p डॉट प्रिंट, ठीक है. इसी तरह से p डॉट सेट x, p डॉट सेट y, इस तरह से आप उसको कॉल कर सकते हैं फ्रॉम योर मेन प्रोग्राम. जी सलमान, यू हैव रिटन इट करेक्टली. और लेकिन इसमें आपको ब्रैकेट के अंदर उसकी वैल्यू डालनी पड़ेगी जो भी आप वैल्यू सेट करना चाहते हैं. यस, ओके. सो नाउ कमिंग टू द सेटर, आई होप दिस इज क्लियर. This is not a very difficult sort of a concept. Then the second type of functions that are definite part of structs, and later on when we'll study classes you will see that they are also part of the classes also, and that is the getter function. तो यहाँ पे आप इसका getter function जो है वो you can see the getter function here. यहाँ पे this part here is the getter function. तो get क्या करेगा, आपने जिस वेरिएबल की वैल्यू को गेट करना है फ्रॉम द प्रोग्राम, यू कैन गेट दैट वैल्यू. आई मीन दिस फंक्शन वुड रिटर्न द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट यू वांट टू गेट, ठीक है जी. तो यहाँ पे मैंने लिखा है गेट एक्स, ठीक है. द नेमिंग इसकी कन्वेंशन इस तरह से रखी गई है कि ये एक्स मुझे बता रहा है कि दिस फंक्शन इज प्राइमरीली फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स.
अगर मैं गेट वाई करूंगा तो दिस फंक्शन इज प्राइमरीली गेटिंग द वैल्यू ऑफ वाई। अगर मैं कहता हूँ लेट्स से गेट पार्ट नंबर, तो जैसे इन्वेंटरी टेबल के केस में दैट फंक्शन जो कि गेट पार्ट नंबर वुड गेट द वैल्यू ऑफ पार्ट नंबर, उस वक्त जो पार्ट नंबर की वैल्यू पड़ी हुई है जिस अरे के अंदर भी, उसकी कैसे आपने कॉल करना है वो अलग से है। लेकिन यहाँ पे बिकॉज दिस इज नॉट एन अरे, इट्स अ सिंपल वेरिएबल एक्स हेयर, तो एक ही स्टेटमेंट इसके अंदर आएगी एंड दैट इज रिटर्न एक्स। ठीक है, सो व्हेन एवर यू विल कॉल गेट एक्स इट विल रिटर्न द वैल्यू ऑफ एक्स, वेरिएबल एक्स जो कि पॉइंट के साथ एसोसिएटेड। ठीक है, इट विल रिटर्न दैट वैल्यू, राइट। और इसी तरह से आप गेट वाई भी कर सकते हैं। So get y would always return the value of y. So if at some point in time you want to find out, say आपने कोई एक कंडीशनल स्टेटमेंट लिखनी है और आपको y की वैल्यू का अंदाजा नहीं है, you want to make sure कि y की ये स्पेसिफिक वैल्यू हो तो मैं ये कंडीशन लगाऊंगा, तो आप वो कंडीशनल स्टेटमेंट लिख सकते हैं। लेकिन जस्ट टू प्रिंट दैट स्टेटमेंट, जस्ट टू प्रिंट दैट वैल्यू आल्सो एंड जस्ट टू गेट दैट वैल्यू आल्सो आप गेट फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। So this is the getter function. एक्सक्यूज मी Yes. सर, हम डॉट ऑपरेटर लगा के भी यही चीज कर सकते हैं, तो कर फिर सकते हैं गेटर आप। क्यों यूज करेंगे? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दिस इज डिफाइंड एज पार्ट ऑफ द स्ट्रक्ट। आप एक ही दफा डिफाइन करते हैं वो फंक्शन और बाद में उस फंक्शन को कॉल करते हैं। आप डॉट म्यूटेशन के साथ भी यही कर सकते हैं, ठीक है, दैट्स परफेक्टली फाइन। लेकिन अभी अगर आपने अरेज की फॉर्म में देखा होगा तो हमने 2 दफा डॉट यूज किया है, पी डॉट डे डॉट समथिंग। तो असाइनमेंट के लिए आपके लिए जो था वो उसमें थोड़ी सी हैसल होती है। अब अगर आप एक ही दफ़ा फंक्शन डिफाइन कर देंगे तो आपको बार बार वो यानी एक कॉम्प्लेक्स किस्म की स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। आप स्टेटमेंट एक ही दफ़ा लिखेंगे और सिंपल फंक्शन कॉल करेंगे। कॉलिंग अ फंक्शन इज रिलेटिवली ईजियर, क्योंकि दूसरी जगह पे आप शायद सिंटेक्स की कोई मिस्टेक भी कर सके। तो इसलिए सेटर्स एंड गेटर्स एक्चुअली मेक थिंग्स ईजियर rather than difficult, and you don't have to remember the syntax every time. ठीक है, आपको फंक्शन कॉल का सिंटेक्स सिर्फ पता होना चाहिए और सिंपल एक डॉट म्यूटेशन के साथ आप फंक्शन कॉल करें और वैल्यू असाइन कर दें। ठीक है, आपको उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज में जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, सो दैट्स एक्चुअली द रीजन that you can actually use it for this very simple problem. It would seem कि हम उसको overkill कर रहे हैं, आप उसको एक मुश्किल तरीके से कर रहे हैं, लेकिन for difficult problems and for the problems and for programs जिसमें large number of variables और large number of structs आप use कर रहे हैं, तो this becomes relatively easier way of doing it. ठीक है थैंक यू जी। अच्छा, जहांजेब का ये है कि सेटर के लिए हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं। इसके अंदर आप सी इन सी आउट स्टेटमेंट्स भी डाल दें, सी इन स्टेटमेंट आप डाल दें और यूजर से गेट कर लें वैल्यू। ठीक है, व्हेन यू विल कॉल लेट्स से सेट एक्स को कॉल करेंगे तो उसके अंदर अगर एक सी इन स्टेटमेंट पड़ी हुई है तो वो सी इन स्टेटमेंट यूज करते हुए आप वैल्यू सेट कर सकते हैं उसकी। ठीक है, वैल्यू यूजर से ले लें और पुट कर दें उसके अंदर, दैट्स वो कोई मसला नहीं है, यू कैन एक्चुअली डू दैट। ठीक है जी। अच्छा, सो दिस इज व्हाट सेटर एंड गेटर वुड मीन, और फिर दिस इज द गेटर फॉर द वैल्यू ऑफ y, राइट, एंड नाउ दिस इज अ कंप्लीट स्ट्रक्ट। ठीक है, इसके अंदर आपके पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर नहीं है, लेकिन आपने वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया, 2 सेटर्स डिफाइन कर दिए और 2 गेटर्स डिफाइन कर दिए। रिमेंबर जो डिफॉल्ट वे ऑफ डिफाइनिंग सेटर्स है कि आप हर वेरिएबल के लिए अलग सेटर फंक्शन आप डिफाइन करें ताकि आप हर वेरिएबल को अलग से सेट कर सकें और हर वेरिएबल को अलग से गेट कर सकें। ठीक है, so this is what setting and getting of functions would actually mean. ठीक है, setting and setter and getters for the struct जो कि हमने वो कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा अरेज ऑफ स्ट्रक्ट डिफाइन किए थे, उसके लिए आप इसको कैसे करेंगे? यू विल पुट द सेटर्स एंड गेटर्स हियर। यहाँ पे सेटर्स एंड गेटर्स जो हैं वो यू कैन राइट डाउन द सेटर्स एंड गेटर्स फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन, फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्ट। ठीक है, ओके
and this is how you can actually do that. So for one variable, let's say set part, इसके लिए set part number और you pass on the argument जो value आपने part number में set करनी है, that is an integer value, तो आप उसको integer int a करेंगे और फिर part number को assign कर देंगे a के साथ, ठीक है, a की value, और get करने के लिए it's exactly a similar way जो कि मैंने पहले आपको बताया, you can actually use this getter function, get part number and this would return d. इसमें argument यहाँ पे obviously आपको कोई देने की ज़रूरत नहीं है, probably this is you can do away with this particular int b part, int b part लिखने की ज़रूरत नहीं है, it's basically the get function. लेकिन इसमें important चीज़ ये है कि this type of a function जो कि आपने define किया है, this would return an integer, क्योंकि जो आप value get कर रहे हैं वो b है, और पार्ट नंबर यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो भी आप फर्ज करें इस तरह से लिख लें या जैसे मैंने पहले लिखा है वैसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। अगर इस तरह से लिखते हैं तो यहाँ पे पार्ट नंबर आएगा, ठीक, तो यहाँ पे पार्ट नंबर आएगा, तो गेट पार्ट नंबर ब्रैकेट में भी पार्ट नंबर आप वेरिएबल का नाम लिखेंगे जो कि आप रिटर्न करवाना चाहते हैं, ठीक है। या आप पहले तरीके से लिखें, यहाँ पे कोई आर्गूमेंट ना दें, ठीक है, और यहाँ पे ही आप उस वेरिएबल का नाम लिख दें जो कि आप रिटर्न करवाना चाहते हैं, ठीक है। सो दीज आर लाइक डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट. Yes, so this is what will go inside the inventory struct. लेकिन जब आप उसे कॉल करेंगे, जब आप उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो this is how you will call this function in case of an array, ठीक है, this is how you will call this function. So table 0 dot set part number 6. So what it will do is कि वो 6 को set कर देगा as part number in table 0, राइट, और ये जो स्टेटमेंट है दिस इज अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन जो कि यहाँ पे डिफाइन किया गया है, यहाँ पे इट वुड बी इट विल गेट द पार्ट नंबर, और कौन सा पार्ट नंबर गेट करेगा, पार्ट नंबर गेट करेगा और ऑफ पार्ट नंबर ऑफ टेबल 0, ठीक है। सो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस गेट जो कि पॉइंट के लिए मैंने डिफाइन किया था। ये इस तरीके से भी आप इसको जो है ना गेट फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। सर यस सर, लेकिन इससे इसकी यूटिलिटी खत्म नहीं हो जाती अगर हमने खुद ही स्पेसिफाई कर देना है क्या गेट करना है, तो हम वो वैसे ही गेट कर ले, हम वैसे ही बस डॉट नोटेशन यूज कर लेंगे। जी, मैं वही आपको बता रहा था कि आप डॉट नोटेशन बिल्कुल यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जो फंक्शंस है ना, these functions would help you in basically organizing your program in a better way, ठीक है। अब आप या तो आप सिंटैक्स को अच्छे तरीके से याद रखें, या आप एक ही दफ़ा सिंटैक्स के मुताबिक चीज़ों को डाल दें और फिर एक आप सिंपल फंक्शन कॉल करें, ठीक है। तो फंक्शन कॉल्स आर रिलेटिवली इजियर, तो इसलिए आप इसको सर मेरा पॉइंट ये था कि जो ये जो टेबल 0 डॉट गेट पार्ट वाले के अंदर फिर दोबारा से हमें डॉट नोटेशन यूज करनी पड़ी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि अगर हमने फिर बता ही देना है कि टेबल 0 डॉट पार्ट नंबर ही बुलाना है तो फिर तो हम वैसे ही ले लें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप पहले वाले तरीके से करें, ठीक है, जो जिसमें मतलब वो बेहतर नहीं था जिसमें हमने आर्गुमेंट कोई नहीं पास करना। यू आर राइट, लेकिन ये दोनों तरीके हैं। द रीजन दैट दिस हैज बीन शोन हियर इज जस्ट टू टेल यू कि दिस इज आल्सो लाइक वन वे ऑफ डूइंग इट, ठीक है। यू कैन डू दिस आल्सो और यू कैन डू द अदर, जो कि पिछली दफा जो कि पिछली स्लाइड के अंदर पॉइंट के लिए किया था। यू कैन डू बोथ, आइदर ऑफ द टू, दोनों तरीकों से। ठीक है सर। सो दिस इज जस्ट टू टेल यू कि ये भी एक तरीका है जिससे आप कर सकते हैं। Okay, so this is how you will actually call this, right? It's not very different from the other way of doing it. लेकिन यहाँ पे अब हो क्या रहा है कि you are actually using a function. आप डॉट न्यूटेशन से भी कर सकते हैं और आप इस फंक्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है सर। जी सर, जो पॉइंट वाला हमारा स्ट्रक्ट था उसके गेटर के अंदर तो हम जो अगर कोई आर्गुमेंट ना पास करें और एक्स रिटर्न करें तो वो तो हमें पता ही होगा कि वो इंटीजर एक्स वाला ही होगा, लेकिन अरेज के केस में तो हमें नहीं पता कि वो कौन सा इंस्टेंस है। हाँ, ये भी एक बात है, यू आर राइट, ये भी एक बात है कि इसमें हम कौन सा गेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें
जब आप उसको क्वांटिफाई कर देते हैं टेबल 0 डॉट गेट पार्ट, तो वो अकॉर्डिंगली फिर टेबल 0 के ही वैल्यूज को गेट करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्योंकि जब आप कॉल कर रहे हैं फंक्शन को, तो टेबल 0 डॉट गेट पार्ट नंबर कर रहे हैं ना, तो अब उसमें वो जो भी पार्ट नंबर गेट करेगा दैट वुड बी ऑफ टेबल 0, ठीक है नहीं। लेकिन जब आप आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं एक्सप्लिसिटली, तो फिर आपको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि कौन सा आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों में डिफरेंट है। लेकिन जो इजियर है, जो आसान है, आप वो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मेरा ख्याल है कि उस केस के अंदर आपको ये दोबारा से करने की जरूरत नहीं होगी। पहले वाले केस के अंदर आप उसको विदाउट नेमिंग द इंस्टेंस आल्सो विद इन द बॉडी ऑफ द गेटर फंक्शन, probably you can do this, ठीक है। Again, you can try this, work out this and see के what is the outcome अगर आप टेबल 0 को हटाते हैं using the previous method. Okay, सर वन please, स्मॉल थिंग, please. तो ये void functions के डेफिनेशन के एंड पे सेमीकोलन डालना जरूरी है? ये जो void set part और void ये जो int get part डिफाइंड है जहाँ उसके अंदर, तो यहाँ पे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है ये, क्योंकि अलग से मैंने डिफाइन किया हुआ इसलिए उसको डाल दिया, लेकिन आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरी, ठीक है Sir, ठीक है। sir, I don't understand the idea of passing an argument into the getter function. Both the function return कह रहा है value, so why are we passing an argument into it? अच्छा, इसमें आइडिया ये है कि जो आर्ग्यूमेंट आप पास कर रहे हैं ना, वही वो रिटर्न कर रहे हैं। यानी पार्ट 0 टेबल 0 डॉट पार्ट नंबर आप एंटर कर रहे हैं और वही वैल्यू वो रिटर्न कर रहे हैं। इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग डिफरेंट। पहले केस में क्या था, पहले केस में आप कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे थे, लेकिन रिटर्न के आगे आप वेरिएबल का नाम लिख रहे थे। यहाँ पे वेरिएबल का नाम आपने अपनी मर्जी से बी डिफाइन कर दिया, लेकिन ये कौन सा बी है ये आप क्वालिफाई कर रहे हैं बाय पासिंग एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो ये दोनों केसेस में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो फिर जब हम लोग आर्गुमेंट पास करेंगे so we'll just write return. हाँ, रिटर्न, और क्या रिटर्न करना है इस केस में, रिटर्न बी है, ठीक है ना। तो आपने बी को रिटर्न कर लिया जस्ट टू मेक इट एक्सप्लिसिट, ठीक है। दूसरे केस में, पिछले केस में इफ आई गो टू द प्रीवियस केस, यहाँ पे आपने कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया, रिटर्न एक्स है। अब इसे पता है कि कौन सा एक्स रिटर्न करना है, वो वही है जो कि पॉइंट के साथ एसोसिएटेड है, ये वाला एक्स रिटर्न करना है, ठीक है। तो इस केस में आपने आर्गुमेंट को पास नहीं किया इस केस में। लेकिन अगर आप आर्गुमेंट को पास करते हैं तो फिर जो भी आर्गुमेंट का नाम आप रखेंगे वही आपने रिटर्न में लिखना है, ठीक है। अगर सो दैट इज हाउ दिस वुड एक्चुअली वर्क, ठीक है। सो देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस, इसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस जो है ना वो नहीं है। अच्छा, देन मूविंग ऑन, ये तो आ गया आपके पास गेटर और सेटर फंक्शंस। द कांसेप्ट्स आर नॉट वेरी डिफिकल्ट, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दीज कांसेप्ट्स इजीली। जी बताइए सर। ऐसा कर सकते हैं कि जो हमने गेटर बनाया था उसमें आर्गुमेंट पास ना करें और रिटर्न पार्ट नंबर कर दें, तो फिर हाँ जी, बिल्कुल कर सकते दोबारा पार्ट नंबर रिटर्न। आई थिंक यू कैन डू इट, यस, ठीक है, यू कैन डू दिस। अच्छा, अब एक और चीज के structs as you know they are user defined data types, ठीक है। तो अब ऐसे भी हो सकता है कि आप कुछ फंक्शंस ऐसे हों जो कि कुछ ऐसे भी फंक्शंस हों जो कि struct को रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। रिटर्न फंक्शंस जो हैं दे रिटर्न आर्गुमेंट्स से वेरिएबल्स, वो इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है। इसी तरह कुछ फंक्शंस ऐसे भी हो सकते हैं जो कि स्ट्रक्ट को रिटर्न करें, बिकॉज स्ट्रक्ट इज आल्सो यूजर डिफाइंड डेटा, ठीक है जी। तो लेट्स से कि अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं और वो पॉइंट फंक्शन हमने पहले पॉइंट स्ट्रक्ट हमने डिफाइन कर दिया। अब 2 पॉइंट्स को अगर आप ऐड करेंगे तो एक तीसरा पॉइंट आपके पास आ जाएगा, एंड दैट थर्ड पॉइंट will also be a struct. So अगर P1 आपके पास struct है और P2 एक और struct है, जब दोनों को आप ऐड करेंगे तो दोनों की रिस्पेक्टिव x वैल्यूज ऐड हो जाती हैं और दोनों की रिस्पेक्टिव y वैल्यूज ऐड हो जाएंगी और आपके पास P3 आ जाएगा जो कि एक नया struct है। तो अब लेट्स से ये सारा काम मैं एक फंक्शन के अंदर करना चाहता हूँ और वो फंक्शन के अंदर जब मैं करता हूँ तो फंक्शन जब वैल्यू रिटर्न करेगा वो P3 की वैल्यू को रिटर्न करेगा। एंड व्हाट इज P3? P3 इज अ struct, ठीक है। So you can write down functions that would return structs, ठीक है।
आप फंक्शन ऐसे लिख सकते हैं जो कि स्ट्रक्ट्स को रिटर्न करें, ठीक है जी। सो व्हेन यू आर यूजिंग दीज डिफरेंट स्ट्रक्ट्स टुगेदर और उसके ऊपर आप कोई भी ऑपरेशन करते हैं, एज अ रिजल्ट यू गेट अ स्ट्रक्ट, and whatever that operation you are doing, whatever that functional treatment you are doing with that struct, with those structs, that is done inside a function, then the return type of that function should also be a struct. क्योंकि let's say कि जैसे मैंने p1 p2 की बात की, there are two structs, आपने उनको ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, दो पॉइंट्स को ऐड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई कर दिया या डिवाइड कर दिया, और जो रिटर्न वैल्यू आएगी इस फंक्शन की जो कि ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन परफॉर्म कर रहा है, दैट इज आल्सो अ स्ट्रक्ट. सो p3 इज आल्सो अ स्ट्रक्ट. ठीक है. सो यू राइट डाउन फंक्शंस जो कि स्ट्रक्ट्स को रिटर्न कर सकते हैं. एंड हियर इज एन एग्जांपल ऑफ द ऐड फंक्शन जो कि रिटर्न कर रहा है स्ट्रक्ट, राइट. एंड हाउ डू यू एक्चुअली राइट इट डाउन? This is the key point here. This is the statement that you need to remember. Right? Okay. So this is the only thing that I want to emphasize here is the return type. The return type here is point. ठीक है. Right? So that's the key thing that you need to remember in this particular case. Okay. And this was also part of the question, but it's important that you remember the syntax of this. ठीक है. So किसी भी function की return type जो है वो struct हो सकती है, and that you have already probably practiced in the lab question also. जी. तो लैब में ये मसला ये नहीं था कि वो ऐड नहीं हो रहे थे, लाइक ऐड तो वो हो रहे थे और इसी तरह किया था. मसला ये था कि वो साथ जैसे 2020 में से अगर आप 2006 निकालो तो 2000 की रिमेंडर वैल्यू उसका मसला आ रहा है. जी बिल्कुल, करेक्ट, दैट्स राइट. लेकिन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट स्पेसिफिक क्वेश्चन जो कि लैब में दिया गया है. आई एम टॉकिंग अबाउट द सिंटैक्स ऑफ दिस फंक्शन जो कि रिटर्न करता है एक स्ट्रक्ट को. सो द थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज कि द रिटर्न टाइप में स्ट्रक्ट का नाम आएगा. ठीक है. रिमेंबर, इंस्टेंस का नाम नहीं आएगा, स्ट्रक्ट का नाम आएगा. जैसे इन्वेंट्री एक स्ट्रक्ट हमने डिफाइन किया था, तो इन्वेंट्री के अंदर अगर हम लेट से जो सॉर्ट हम कर रहे थे, आप सॉर्ट करने के बाद भी वो स्ट्रक्ट ही दे रहा है आपको आउटपुट के ऊपर, तो उस केस में यहाँ पे आपको स्ट्रक्ट का नाम लिखना पड़ेगा, इंस्टेंस ऑफ दैट स्ट्रक्ट का नाम नहीं लिखना. That's the thing that you need to keep in mind here. And there are some of the examples from that, and here is the main the complete program for the addition bit. Okay, now this completes our basic discussion on structs, and now what we'll do is that we'll move on to the pointers and see that how pointers can actually be used here. And I'm sure you have studied pointers और आपको pointers याद होंगे अभी तक. ठीक है. So what is a pointer? I mean, you can unmute and answer, anyone. Sir, pointers are a variable that store the address of another variable. Okay, a pointer is primarily a memory location that stores an address of another variable. That's what has been said, and that's what it is. कि अगर एक वेरिएबल, लेट से आपके पास अगर x एक वेरिएबल है और x की एक वैल्यू आपने असाइन की है which is 10, तो you can define a pointer p that points to the address of x, not to the value of x. ठीक है. That's what pointer is. ठीक है. और यहाँ पे you already know the notation.
कि न्यूटेशन क्या इसमें यूज़ होती है. न्यूटेशन is that if you are declaring and initializing a pointer, you have to use this statement जहाँ पे this star is used here and this ampersand sign is used here. ठीक है. This is how you can actually do that. अगर मैं p की वैल्यू को प्रिंट करूंगा it will give you the address. अगर मैं स्टैटिक p की पॉइंट को स्टार p की पॉइंट p को प्रिंट करूंगा तो I'll get the memory. I'll get the value at that particular memory location जो भी वैल्यू पड़ी हुई. ठीक है जी. जो भी मेमोरी p में पड़ी हुई है उसके अगेंस्ट जो वैल्यू है that value will actually be printed in this particular case. Okay, so this is the standard way of declaring a pointer and then initializing a pointer. ठीक है जी. अच्छा, so I'll just show you this particular slide और उसके बाद and that this would clarify the concepts. अगर किसी के जहन में ये बात नहीं है इस वक्त नहीं है तो I'll just revise that bit के how are these pointers working. So let's say you have got a value 100 and that is stored in a variable var1 and that variable is of type integer. ठीक है. A pointer and this value is placed as at a particular memory location और वो memory location यहाँ पे दी हुई है 0x123. इस memory location के ऊपर ये 100 पड़ा हुआ है. So when I'll define a pointer, the pointer will point to the memory location 0 cross 123. ठीक है, not to the value 100. So pointer जब मैं int static ptr करता हूँ so int static ptr में ये मेमोरी लोकेशन पड़ेगी. ठीक है. तो जब मैं ptr को प्रिंट करूँगा तो ये मेमोरी लोकेशन जो है ये प्रिंट हो जाएगी और जब मैं स्टैटिक ptr करूँगा तो वो मेमोरी लोकेशन के अगेंस्ट जो वैल्यू है और मेमोरी लोकेशन के अगेंस्ट वैल्यू जो है वो 100 है. दैट वैल्यू विल बी प्रिंटेड. सो 100 विल गेट प्रिंटेड. लेकिन देयर इज वन मोर थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड बिकॉज ptr is also being declared as a variable. ठीक है. तो ptr की एक अपनी मेमोरी लोकेशन भी होगी and the address of pointer will be the memory location जहाँ पे ptr जो है pointer की memory allocation जहाँ पे है. So there are two memory locations. One is of the pointer itself जो कि 0 cross 155 है and the second memory location is that is present at 0 cross 155. So 0 cross 155 के ऊपर जो memory location पड़ी हुई है वो 0 cross 123 है और 0 cross 123 के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है that is 100. ठीक है. So this is how this would actually work. So जब आप पॉइंटर को डिक्लेयर कर रहे हैं और इनिशियलाइज कर रहे हैं तो दो मेमोरी लोकेशन इन प्लेस आएंगी. एक वो मेमोरी लोकेशन है जो कि पॉइंटर में पड़ी हुई है और एक वो मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे खुद पॉइंटर पड़ा हुआ है. ठीक है. सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर. और we have just got a few minutes left, so I'll just go over this very quickly, but next time we'll go over it in detail. So ये आपके पास एक स्टैंडर्ड वे है जो कि आप स्लाइड पे देख रहे हैं. पॉइंट P आपने एक इंस्टेंस डिक्लेयर किया ऑफ स्ट्रक्ट P और जी देयर आर फ्यू क्वेश्चन. जी सारा आपने हाथ उठाया हुआ और फिर शयान. सर मेरा पीछे से क्वेश्चन था गेट फंक्शन के बारे में. गेटर फंक्शन के बारे में उसमें मुझे ये नहीं समझ आ रही कि प्रिंट फंक्शन और गेटर फंक्शन में मतलब फायदा क्या है गेटर का. मतलब हम प्रिंट भी तो कर सकते हैं. गेट फंक्शन ओवरराइट नहीं करता वेरिएबल्स की वैल्यूज को, वो सेट फंक्शन करता है तो वो सिर्फ रिटर्न करता है उसको. और अगर हमें उसको एक्सेस करना भी है तो हमें इसको सी आउट करना पड़ेगा. तो प्रिंट फंक्शन फर्ज करें आप आप गेट फंक्शन जो है ना वो प्राइमरीली गेट फंक्शन और प्रिंट फंक्शन के अंदर जो है वो आई मीन बेसिक डिफरेंस यही है कि उसकी फंक्शनैलिटी प्रिंट करना है. गेट का
गेट का मकसद प्रिंट करना नहीं है। गेट फंक्शन का मतलब जो है ना वो सिर्फ ये देखना है कि टू गेट द प्रेजेंट वैल्यू दैट इज प्रेजेंट विद इन द इन दैट पर्टिकुलर वेरिएबल, ठीक है, और फिर आप उसको फर्दर यूज कर सकते हैं। प्रिंट में आप वैल्यू को, जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको सिर्फ प्रिंट कर सकते हैं ना, उसको फर्दर यूज नहीं कर सकते। लेट्स से कि मैं मिसाल के तौर पे मैं वैल्यू को गेट करना चाहता हूँ और उसे किसी और वेरिएबल को असाइन करना चाहता हूँ, तो वो हम प्रिंट के साथ नहीं कर सकते, ठीक है, वो मैं गेट के साथ कर सकता हूँ। आई विल गेट द वैल्यू एंड असाइन इट टू सम अदर वेरिएबल, ठीक है ना। तो आई कांट डू दैट यूजिंग प्रिंट। तो इसलिए प्रिंट जो है ना उसको आप उससे कंफ्यूज ना करें, ठीक है। दोनों की फंक्शनैलिटी में बहुत फर्क है, ठीक है जी। if still there is a question, तो आप you can either send me an email or you can talk to the TAs and get further clarity on this. जी माँ। Sir, I wanted to ask कि when we declare an array of structs, how do we use a parameterized constructor on that? Okay. So उस केस के अंदर इट्स एग्जैक्टली द सेम वे जो कि आपने पहले पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जैसे नॉर्मली डिफाइन करते हैं, आप बिल्कुल उसी तरह से पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करेंगे। लेकिन व्हेन यू विल बी कॉलिंग द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है, अगर आपने ऑल्टरनेट वेज देखे हो, ठीक है, ऑल्टरनेट वेज जो मैंने आपको बताया कि रेज के अंदर वैल्यूज को कैसे आपने पॉपुलेट करना है, यू कैन यूज एनी ऑफ दोज ऑल्टरनेट वेज टू असाइन द वैल्यूज। लेकिन जैसे आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं एग्जैक्टली उसी तरीके से आपने डिफाइन करना है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब आप उसे कॉल कर रहे होंगे तो आपने क्योंकि एक्सप्लिसिट कॉल होती है ना, रिमेंबर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की एक्सप्लिसिट कॉल होती है, तो दैट वुड बी बेसिकली यू विल बी कॉलिंग टेबल 0 के लिए आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे और फिर उसके आप आर्गुमेंट्स पास करेंगे, ठीक है। सर तो हमें लूप बनानी पड़ेगी। हाँ, अगर आपने सबको करना है, अगर आपने तमाम अरेज को स्ट्रक्ट्स को इनिशियलाइज करना है तो फिर आपको लूप बनानी है, ठीक है। तो जैसे टेबल 0 और फिर आप उसको इक्वेट कर देंगे इन्वेंटरी और ब्रैकेट में आप उसके वेरिएबल नेम्स दे देंगे। ऑल्टरनेट वेज आप देख लें जो मैंने पहले डिफाइन किए हुए हैं, उसको यूज करते हुए आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कर सकते हैं, ठीक है। सर सो कैन दे आल्सो बी यूज्ड ऑन पॉइंटर्स? व्हाट? सर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर्स, अगर हमारे पास स्ट्रक्ट टाइप पॉइंटर हो, वो पॉइंटर्स आपके क्या काम कर रहे हैं? पॉइंटर्स प्राइमरीली तो आपकी वैल्यूज आपके वेरिएबल्स को पॉइंट कर रहे हैं ना। तो आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर या उसके बाहर जहां पे भी आपने वेरिएबल एक्सेस करनी है, आइदर यू कैन डू इट डायरेक्टली और यू कैन डू इट थ्रू पॉइंटर्स, ठीक है। सो यू कैन डू एवरीथिंग यूजिंग पॉइंटर्स आल्सो, ठीक है। सो जो भी चीजें हम कर रहे हैं, यू कैन आल्सो डू इट यूजिंग पॉइंटर्स, ठीक है। So okay, I think we have already. Ji Sara, is there still a question? No sir, पहले का है वो. Okay, ठीक है. Right. So I think we can continue with this discussion next time. We have already on time. So let's just finish today's discussion. I'll upload the coding video separately और आप उसको ज़रूर देखिएगा, and hopefully after looking at that you will basically get to know किस तरह उसको यूज़ करते हैं। If there is नहीं that अच्छा, ये जो वीडियो है, this video would be available on the channel which I have created, जो कि मैं आपको लिंक भेजता हूँ। तो CS200 का ये यूट्यूब चैनल है, यू कैन एक्चुअली गेट इट फ्रॉम देयर, ठीक है। उसका लिंक नॉर्मली मैं आपको भेज देता हूँ, तो वो आप उसको देख लें। अगर आप चैनल पे जाते हैं तो चैनल पे जाके बाकी सारी वीडियोस भी पड़ी हुई हैं अलॉन्ग विद द वीडियो जो कि पिछले लेक्चर के ऊपर थी। आई गेस कि आप उसको ज़रूर देखिए, दैट वुड हेल्प आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है जी। ओके जी, इफ देयर इजंट एनी अदर क्वेश्चन shall we end? जी उमर। सर जो हम स्ट्रक्ट्स के अंदर वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं उनका स्कोप प्लीज बता देंगे कि क्या? जी, स्कोप के ऊपर भी इंशाल्लाह आएंगे। अभी हमने स्कोप की बात डिलिबरेटली हम स्कोप की बात नहीं कर रहे, क्योंकि फर्स्ट वी वांट टू
लाइक गो थ्रू द कंप्लीट सिंटेक्स और उसकी यूटिलिटी, और फिर हम स्कोप के ऊपर आएंगे। आप उसके स्कोप को लिमिट कर सकते हैं, आप उसके स्कोप को विदिन स्ट्रक्ट लिमिट कर सकते हैं, आप उसके स्कोप को विदिन फंक्शन लिमिट कर सकते हैं, आप उसके स्कोप को ग्लोबल रख सकते हैं। सो देयर आर ऑल दीज डिफरेंट थिंग्स दैट यू कैन एक्चुअली डू, ठीक है, by using keywords such as public, private and some other keywords को यूज करते हुए आप उसके स्कोप को लिमिट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सारी डिस्कशन अभी हमने करनी है, सो लेट्स वेट, ठीक है सर। यस सर, ये जो आप अभी कह रहे थे कि अरेज के लिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर करना है, तो उसमें तो हम टेबल का नाम तो नहीं यूज करेंगे, इससे हमने पहले स्ट्रक्ट डेट के लिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का नाम भी डेट रखा था। जिस रो को आप पॉपुलेट करना चाह रहे हैं ना, वो रो तो आपने बतानी है। तो सर हम इस तरह नहीं करेंगे कि इन्वेंटरी लिख के उसके आगे ब्रैकेट में 3 वेरिएबल लिख दें और फिर नीचे कह देंगे पार्ट नंबर जो है वो, अगर आप एक ही में करना चाह रहे हैं, अनलेस अगर आप लूप में करना चाह रहे हैं लूप में कर लें, ठीक है, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं ना कि आप इन्वेंट्री के आगे उसके वो सारी डिटेल्स डाल दें मल्टीपल ब्रैकेट्स के साथ, दैट्स आल्सो पॉसिबल। जैसे अरे को पॉपुलेट करते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हुए भी हो सकता है, ठीक ठीक है, ठीक है जी। एनीथिंग एल्स? ओके, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। इफ देयर इजंट एनी अदर क्वेश्चन, so let's finish today's discussion, and